Hello everyone and welcome to the another video. Today I have with me Govind Bali sir and I will be your host Himanshi Chaudhary. Today's topic is deeply very personal and kind of a very trending topic. As we know that divorce rates have increased in 21st century, what could be the reason, sir? सी डाइवोर्सेस इंक्रीज होने के बहुत सारे रीजंस हैं. वन इज दैट technology has come in, relationship have become more like, you know uh, a hobby for people nowadays. It's not like the same way that companionship used to be treated earlier. The amount of adaptability with each other has decreased. Issues are made out of nowhere also. I mean, I still remember I had a case wherein the guy wanted divorce because his wife used to put a lot of salt in the food. So, divorces can happen on any reason in this country now. Second is, see, जब बच्चे छोटे होते हैं, generally say ninth, 10th से they start dating, or maybe even before that. So when they start dating, they have already seen that breakups are something that you can move on from. It is not something very big. So even if the relationship breaks, कल को तुम्हें नया relationship मिल जाएगा and you'll be able to move on in life. But what they forget is that this is not a normal, fling that you're into. यहाँ पे जब ब्रेकअप होगा तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. इट इज अ मैरिज, इट इज अ सेक्रामेंट एज पर हिंदू लॉ. ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसे मुस्लिम लॉ है. मुस्लिम लॉ में मैरिजेज आर कॉन्ट्रैक्ट, बट इन हिंदू लॉ marriages are not a contract. So basically they have got so habitual to breakups, and so habitual कि इनको ये लगने लग गया है कि डाइवोर्स होगा तो क्या हो गया, नया रिलेशनशिप आ जाएगा, we'll be able to move on in life. So in the end they do not realize that marriage comes with a lot of responsibility, a lot of adjustments, a lot of, you know what should I say, responsibilities, wherein you have to deal with the idea of companionship. You have to be in the relationship and go forward with it. So where do you think a divorce is mostly happen in a love marriage or an arranged marriage person? Irrespective of love marriage or arranged marriage, I mean, in arranged marriages also I see a lot of divorces happening. In love marriages, I mean, where the courtship period has been of around 12 years, there also divorces are happening. आई मीन कोर्टशिप पीरियड इज कि जिसमें वो पहले रह चुके हैं साथ, 12 साल तक वो साथ में थे. 12 साल साथ रहने के बाद शादी के 2 साल के बाद डाइवोर्स हो गया. सो बेसिकली बहुत चीजें डिफर करती हैं. जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, यू आर ड्रेस्ड अप एट योर बेस्ट. ओके, यू go with the best that you have, you smell so good. In the end, when you come home, you realize that guy has not taken bath for 2 days. That lady looks totally different without the makeup. She's not that sweet the way she acted that time when she met you for the first day, or the time when you were in the idea of being into the relationship. उसके बाद क्या है कि दो लोगों का अलग रहना और एक साथ रहने में डिफरेंस आ जाता है. Now, for example, you are dating someone and that person has a night job. हाँ, वो नाइट शिफ्ट जो है घर से ही कर रही है वो बंदी अगर, तो तुम्हें एक टाइम के बाद रियलाइज होने लग जाएगा कि यार ये कर रही है. इफ यू आर सेंसिबल एनफ, यू विल बी लाइक ठीक है, शी हैज टू वर्क, शी विल वर्क एट द नाइट. बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे ये रात को क्यों काम कर रही है, मेरी नींद खराब हो रही है. सो reasons could be anything from domestic violence to extramarital affairs to interference of mother-in-laws and father-in-laws and sister-in-laws. Divorces can happen on any ground. मतलब हो नहीं सकते किसी भी ग्राउंड पे, पर उनके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं. डाइवोर्स करने के लिए किसी को ये नहीं चाहिए कि अरे हाँ हाँ ठीक है, बहुत रीजनेबल रीजन है इसलिए मैरिज टूट गई. रिश्ते बनाने में समय लगता है, टूटने में तो छोटी छोटी चीजों पे भी टूट जाते हैं. Okay. So we have seen that it's generally said that people in a live-in relationship, if they live together, there are more chances of being in a successful marriage. सी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आई मीन लिव इन रिलेशनशिप भी फेल हो जाते हैं. Yeah, that happens. So, it is not that if you're in a live-in relationship, there is no guarantee that you're going to get married. Live-in relationships also give rise to a lot of cases of rape on context of marriage. They also give rise to a lot of cases of palimony. अब पैलिमनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं.
But if there is a lady who has been staying in a living relationship with you and she is dependent on you during that relationship, she has got the right to seek maintenance from you the day the living relationship ends. So basically, living relationship भी तो एक household के साथ ही हो रहा है ना. There is a household that exists. There is a relationship that exists. There is a shared household that exists. तो ऐसा नहीं है कि marriages सिर्फ मैरिजेस में ही एलिमनी मिलेगी, मेंटेनेंस मिलेगी. And somebody has correctly said, if marriages are made in heaven, so are divorces. It is not just that marriages only happen in heaven. Some people are in a toxic relationship and marriages have to end. So it does not matter that you are not going to do it or you're going to do it. It happens. There are divorces based on mutual consent, and then there are divorces that get very ugly because it's from one side due to some reason, very petty fights. Do courts ever consider those petty fights? See, Like you said, basically, too much salt in the food. see, cruelty could be anything. Now, cruelty could be not changing your undergarments. Not taking bath could be cruelty because you smell bad. Divorces have been granted on the ground that you snore a lot because that's hampering the right to life of the other person. Being epileptic is a ground for divorce. Having any sexually transmitted disease could be a ground for divorce. Extramarital affairs could be a ground for divorce. Adultery could be a ground for divorce. Drinking a lot, alcoholism is a ground for divorce. Continuously ignoring your husband, not talking to him is a ground for divorce. Not allowing the husband to consummate or non-consummation of marriage for a long period of time after the marriage is also a ground for divorce. Not being able to be in a stable relationship or giving time to the family, not able to maintain the family or give them the actual rights that they deserve is a ground for divorce. Now, petty fights का मतलब तो ये भी हो सकता है मुझे टॉफी नहीं मिली, you did not give me a flower or something. See, it might start with that, but it turns into something really big. It's not just कि आपने मेरे से आज फोन पे बात नहीं करी will give you a divorce. That फोन पे बात नहीं करी starts building boundaries. Those boundaries sometimes go beyond the limits. So when they go beyond the limits, we end up losing relationships. We end up in the courts fighting for divorces. As far as mutual consent divorces are concerned, mutual consent divorces are the sanest way of getting a divorce. उसके अंदर भी क्या है कि कुछ लोग ये मिसगाइड कर देते हैं कि आप नोटराइज करा लोगे अगर डाइवोर्स एग्रीमेंट तो आपका डाइवोर्स हो जाएगा. ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता इस कंट्री में जो नोटराइजेशन के थ्रू डाइवोर्स को अलाउ किया जा सके या मैरिज को अलाउ किया जा सके. Divorces have to come through a family court. Once a family court approves the divorce, you get a divorce under the Marriage Act or under the Sikh Marriage Act, under the Parsi Marriage Act or the Special Marriage Act. Basically, divorces cannot be notarized and given. Divorces have to be decided by the court because it's a marriage that has been solemnized. It is a relationship that has been recognized by the government, so you need a legal sanction to it that that bond does not exist anymore. So, what kind of divorces exist in India, like in different religions? See, basically, the divorces are of two types: mutual consent divorce and contested divorce. These are the major divorces. When we talk about the legal framework of it, in Muslims, there are different form of divorces. There is wherein the husband can give the wife a divorce by giving three notices. It is not the talak, talak, talak in one go, but in writing, if you again and again give three times and there is no reply from the side of the wife, that divorce is considered legal. So that concept of that triple talak has been banned altogether is also a myth. Triple talak exists in a different form now. Then there are ways of religious divorces existing, but Indian law generally approves only the divorces which have been accepted by the court of law and the orders have been passed by the court of law. Now, the divorce could be anything or of any religion. In Muslims, certainly religious law allows you to go for a divorce.
In Hindus, Parsis, Sindhi, Sikhs, Christians, divorces are happening through the court only. There's a divorce act also that we have, which is also dealing with divorces. There's a Christian Marriage Act, which also talks about divorce to some extent. So basically, most of the acts have got a provision of divorce. So divorces have to be happening through the court only. How do courts deal with bigamy, polygamy cases in Indian context, like Hindus See, specifically? basically, bigamy is not a crime anymore. Polygamy is not a crime anymore in this country. We have decriminalized it. But in the Indian army, if you are in a bigamous relationship, you will be thrown out of the army. Army has not decriminalized bigamy. So if you are in a bigamous relationship in the Indian army, whether your marriage is solemnized is a different thing. But if you're in a bigamous relationship, you will be thrown out of the army. It's a crime in the military law. And basically, bigamy is a ground for divorce. It might not be having any criminal implications anymore, but it's a ground for divorce. And it's a ground for divorce for a simple reason that you are emotionally and physically involved with someone else. You are not dedicating yourself to one individual, the person you are married with. It is not only that men are into bigamous relationships, there are bigamous relationships of women also. Married women are into bigamous relationships. It is not only men who have to be blamed here. Then comes the concept of fake allegations also. Yeah. In certain cases, people try to put in fake allegations that my wife or my husband is in a relationship, but that relationship, you are not able to prove it. If you're not able to prove it, it cannot become a ground for divorce. You need to prove the point that your husband or wife has been in a bigamous relationship, and that is when the court will give you a divorce. Otherwise, the court's not going to be like कि अच्छा आपने बोल दिया तो divorce हो जाएगा. So basically, बिना एविडेंस के तलाक नहीं होते हैं. तलाक के लिए भी आपको एविडेंस देना होता है. एंड इट इज नॉट अ प्रोसेस कि 2 दिन में आप जाओगे और बोलोगे जी हमें तलाक चाहिए और मिल जाएगा. There are times when the divorces are not allowed by the court. Looking at the evidences, wherein they say divorce नहीं हो सकता because आपके पास sufficient grounds ही नहीं है divorce के लिए. As we see, like you said, there's a specific time. Divorce cannot happen in 2 days. I think there's a 6 months cooling off period That is in in case mutual of consent divorce. So basically, what courts believe in is that if the marriages can be saved, they should be saved. okay. Now, basically, जब भी कोई शादी होती है या कोई रिलेशनशिप बनता है, आप कुछ समय के लिए तो साथ रहे हो. अगर आपने उतना समय एक साथ काट लिया है, इसका मतलब देयर कुड बी सम स्कोप that you are going to live together. So the court gives you some time. It is called the cooling off period. Now this cooling off period is of 6 months. अब इस cooling off period में कोर्ट क्या कहती है कि आप ट्राई करके देख लो अगर आप साथ रह पाते हो या नहीं रह पाते हो. In certain cases, this cooling off period can be waived off also by the court, stating that ki, okay, fine, no cooling off period is required. The marriage has broken, and it is better that they take a divorce. That is also possible, but generally 6 months के period के बाद सेकेंड मोशन की हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं एंड देन डाइवोर्स अप्रूव होता है. आप बेसिकली जब सेकेंड मोशन की हम बात करते हैं या फर्स्ट मोशन की हम बात करते हैं, इसके अंदर एग्रीमेंट्स होते हैं. इसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू डाइवोर्स दिया जाता है. दिस एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना होता है. अब वो एग्रीमेंट ये हो सकता है कि बच्चे किसके पास जाएंगे, आपको एलिमनी मंथली मिलेगी कि वन टाइम मिलेगी, हम लोग कैसे रहने वाले हैं, या मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए, या मैं आपकी प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा लूंगी. वो सब चीजें जो होती हैं वो म्यूचुअल कंसेंट एग्रीमेंट में लिख दी जाती हैं, और उस एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर ही म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्सेस होते हैं. What is judicial separation? सी बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है देन डाइवोर्स. डाइवोर्स के अंदर क्या होता है कि आपकी मैरिज नलिफाई हो जाती है. व्हेन आई से नलिफाई, यू आर नॉट मैरिड एनी मोर. आप लोग का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता इन द कोर्ट और लीगल टर्म्स. But in judicial separation, when you file for judicial separation, you tell the court कि see,
हम लोग जुडिशली सेपरेट हो चुके हैं, हम साथ में नहीं रह सकते, हमें अलग रहना है. But in judicial separation, you cannot get married again. Till the time you are judicially separated, you are staying separate. But you guys are still in a relationship which exists in the legal terms. Now, when you are there in the legal terms, तो आपकी शादी नहीं हो सकती. जब आप अगर किसी से शादी कर लेते हो जुडिशियल सेपरेशन होते हुए, तो वो मैरिज इनवैलिड मानी जाती है. सो बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन के अंदर आप साथ नहीं रहते हो, बट आपकी मैरिज भी खत्म नहीं की जाती है. योर मैरिज इज नॉट डायरेक्टली डिसॉल्व्ड विद अ जुडिशियल सेपरेशन. इट इज लाइक फाइन, यू गाइज आर मैरिड बट you don't want to stay together, so we've given you the orders to stay separately. And in cases of cultural arranged marriages, when one person has converted his religion, he has, let's say he was Muslim, he converted into a Hindu, what happens then? Like, how does court deal with that? नाउ बेसिकली कन्वर्जेंस एज सच इंडिया के अंदर लिखा नहीं गया है कि कोई हिंदू कैसे बन सकता है. बेसिकली there are certain processes by how you can become a Muslim or a Christian. You know, they do some baptization or some process. But in Hindus, as such, the process is not very clear. But generally, people get their religion changed through affidavits and other things, and there is a change of name. The marriage gets solemnized by the Hindu concepts. The Satpati takes place. Satpati is the Sat Feras. Then all the rituals are followed, and then the court will consider whether the marriage happened under the Special Marriage Act or under the Hindu Marriage Act, whether the marriage was voluntary or involuntarily done, whether it was asked by the girl that she is ready to get married under the Hindu Marriage Act or not. If she is ready to get married under the Hindu Marriage Act and उसने अपनी मर्जी से सारे rituals follow किए थे, then the principles of Hindu law would be applied. अगर ये सब चीजें प्रूव हो जाती है कि शी वॉज नॉट रेडी टू कन्वर्ट, शी वॉज नॉट रेडी टू गेट मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, देन द क्वेश्चन वुड कम वेदर द मैरिज वॉज वॉइड और वैलिड. सो देन दैट बिकम्स अ बिगर क्वेश्चन ऑफ लॉ. एंड उसके अंदर फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैरिज लीगल थी कि इलीगल थी, कॉन्ज्यूमेट हुई थी नहीं हुई थी, एंड उसके बाद चीजें डिसाइड होंगी. बट जर्नली अगर दो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, जैसे एक जो लड़का है वो हिंदू है, लड़की क्रिश्चियन है, उस केस के अंदर रिलीजियस लॉज के अंदर मैरिज नहीं होती. द मैरिज हैपेंस अंडर समथिंग नोन एज द स्पेशल मैरिज एक्ट. द स्पेशल मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट the special provisions of marriage where two people of different religions can get married to each other. Okay. So I think there are certain cases where people who have lived too long in a live-in relationship, they're considered married in the eyes of law. See, basically, they are considered to be in a shared household, yes. Whether they're considered marriage or not is a question that is still being explored by the judicial system. Now, whether a child born out of a live-in relationship is legitimate or not is also a question. So, a lot of judgments are there where both parents have agreed that this is our child. So, they say it is a legitimate child. Whereas some people say that they are not legitimate childs because the marriage never got solemnized. So, it is another question that the courts are going to ponder upon in the coming days. So, another question is of children born out of, say, same-sex marriages. Now, frankly speaking, biologically same-sex marriages के अंदर बच्चे नहीं हो सकते, बट आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से तो हो सकते हैं. तो उसके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनकी लीगैलिटी क्या है, who would be the father, who would be the mother. This is also a question which is going to come up in coming days, in which it has to be decided that father and mother का रोल क्या होगा, राइट्स क्या होंगे, गार्डियनशिप कैसे डिसाइड होगी इन केस ऑफ अ पेरेंटल डिस्प्यूट. सो दीज क्वेश्चंस विल कम अप इन द कमिंग टाइम्स. अभी तो इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज नहीं किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट विद टाइम थिंग्स विल चेंज बिकॉज यू नो एज दैट कम्युनिटी विल ग्रो, उनके भी तो लीगल राइट्स आएंगे. अभी भी वो साथ में तो रह सकते हैं. देयर इज नो law in India now which says कि two people who are of same sex or same whether they're two men or two women, they cannot stay together who are sexually attracted to each other. तो अगर वो एक हाउस होल्ड में रह रहे हैं तो ये हाउस होल्ड तो वहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है ना.
तो अगर वहाँ हाउस होल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, वहां पे भी तो लड़ाई हो सकती है, वहां पे भी एक बंदा जो है वो घर को चला रहा हो सकता है और एक बंदा सिर्फ बैठा हुआ हो सकता है. सो हाउ वुड वी डिसाइड ऑन दोस पार्ट्स इज आल्सो अ क्वेश्चन. So, how do you think social media is actually influencing divorces? Is there any way that social media is actually increasing the rate of divorces these days? Certainly yes, you know, basically improve increase कैसे कर रहा है कि पहले क्या होता था, when you used to get married there was a lot of communication between individuals. आज की डेट में हम लोग बहुत एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत एक्टिव हैं फेसबुक पे, बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, बट हमें ये नहीं पता है हमारे घर पे हाल क्या चल रहा है. उनकी फोटो को लाइक करने का और उस पर कमेंट करने का हमें पता है, पर घर आके हम हाल ही नहीं पूछ रहे हैं. Second is the distance between people has virtually been decreased. I mean, you can talk anything to anybody, which is giving rise to a lot of issues also. Somebody might not be as progressive as you. Maybe your wife does not like you talking to women of your class who were your classmates long back, or your husband does not like the way you are dressing up on the social media. आप कहने को तो उसके पर्सनल राइट्स हैं लेडी के, और वो लड़के के भी पर्सनल राइट्स हैं कि वो किसी से बात कर रहा है, बट जब मैरिजेस एग्जिस्ट करती हैं उन राइट्स को फॉलो करने का एक सलीका हो जाता है. यू कैन नॉट जस्ट गेट मैरिड एंड से कि भैया मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कर रहा है. इट इज अ मैरिज, यू नो. In that you both have to live in a way that you both are able to go forward in life. You both are able to generate a way in which you are able to sustain in the society. दूसरी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिख दी जाती हैं. अब कुछ लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट हो भी सकता है, कुछ पे नहीं हो सकता. कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. सो दोज इश्यूज डू एग्जिस्ट, उसमें कोई दो राहें है ही नहीं. अब उसका पॉजिटिव साइड भी है. People, when they see videos on domestic violence, when they say we see videos on marital discords and how to protect themselves in a, you know, toxic marriage, they are able to come out of it also. So basically boon and bane both are there. अब हम उसको देखें कैसे और आगे कैसे बढ़े उसके ऊपर डिपेंड करता है. It is how you interpret the thing. Are the divorce cases first referred to mediation counseling sessions? यस, जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है वो ये कहता है कि जब भी कोई डाइवोर्स हो रहा है, वो जो डाइवोर्स है उस डाइवोर्स के अंदर हमें ये देखना है कि हम उस मैरिज को सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं. अब वो बेसिकली जैसे ही आपका केस फाइल होता है तो फर्स्ट इंस्टेंट जो है वो कोर्ट का ये रहता है कि आपको मीडिएशन या काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाए. तो वो काउंसलर ये ट्राई करती है कि किसी तरीके से आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा जाए. रिजॉल्व करने के बाद वो ये ट्राई करते हैं कि अब आप लोगों को एक साथ रहने का मौका दिया जाए, या आप लोगों को ऐसे फाइनेंशियली फाइनेंशियली कह रहा हूँ इमोशनली सस्टेन करने का मौका दिया जाए कि आप आगे बढ़ सकते हैं. इट इज नॉट लाइक कि सारी काउंसलिंग सक्सीड हो जाएंगी. कुछ केसेस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो एक लेवल से बहुत आगे बढ़ गए होते हैं. जब वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. Is there any case that you had that is very funny other than the salt one? सी बेसिकली डाइवोर्स केसेस को डिस्कस तो नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पर्सनल राइट्स, बट सर्टनली बहुत अजीब अजीब से केसेस भी आते हैं. लाइक आई गॉट अ केस दैट सर आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड माय हस्बैंड डज नॉट लाइक द बॉयफ्रेंड, बट आई एम आल्सो having a relationship with other guy which my boyfriend does not want to know about. For me it was very shocking. See, why it was shocking is, see, there's a marriage that exists. The husband or the wife both have got rights to be with each other and completely be with each other. You are not getting married to be shared. It is not something like the concept of an open marriage that is going on today. And you have not mutually decided to be in an open marriage. And when the guy would do the same thing, it would become a problem. So basically, इसमें चीजें होती हैं, मतलब फनी तो नहीं कह सकते. जनरली व्हेन समबडी विद अ डाइवोर्स कम्स टू यू, दैट गाय इज इमोशनली स्ट्रेन्ड, that person is that lady is emotionally strained. You need to understand
A marriage that breaks within a year is still better than a marriage which is breaking after, say, 12 years of marriage, 13 years of marriage. There is a lot of emotional uh, uh, strain there. वो जो हस्बैंड और वाइफ हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी के बहुत ज्यादा चैप्टर्स जी लिए हैं. उनको एक दूसरे की आदत पड़ चुकी है कि यार जब मैं प्याज काट रही हूँ तो शायद चाय वो बना रहा होगा. Yeah. But then you realize कि यार my life is going to be shattered on the both the sides. But they both also realize कि हम साथ में नहीं रह सकते. So उन marriages के अंदर difficulty तो आती है. And as a divorce lawyer, it is very difficult to console someone. Because see, for us as lawyers, everybody comes with their problems. बट हम उस इंसान को ये समझाने की कोशिश जरूर करते हैं कि सी, if your relationship is meant to be saved, it will be saved through counseling. It might get saved through mediations. And I make it my point to ask the client again and again, are you sure you want to go for divorce? Are you sure there are no ways of getting together? Are you sure no way you can save the marriage? So basically, उसके ऊपर हैं चीजें. मतलब it is not that only husbands can be cruel. At times, even wives are cruel, and there have been books on cruelty by wives. So things do happen. So, what are your thoughts on situationships that are going on right now? I don't understand the concept of situationships. Basically, how can you be in a situationship? Either you're in a relationship or you are single. Either you're dating or you're not dating. I do not understand the concept of situationship. I mean, this is a Gen Z or Gen, I don't know what Gen it is. So, what do you think about? Is there any legal recourse for the husband when he's falsely accused of mental cruelty? It's not proved. Is there legal recourse for that? Yes, they can go for a defamation suit. They can go for compensation on the grounds of a false case. They can go for a perjury case. There are a lot of recourses. It is not that men do not have the rights against false cases. Abhi, there was a case. A lady had married 9 men at 9 different times, and और सबके ऊपर ही alimony का केस डाल रखा था. It's a very famous case now. So basically, ऐसा नहीं है. Some people have made it a business. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लीगल सिस्टम है वो अभी ऐसा कुछ बना नहीं पाया है क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर उस चीज पे सोच नहीं रहा है. कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस देती हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन एंड अगेन गिवन observations that marriage laws or matrimonial laws should not be used for the purpose of abuse or extortion. बट वैसा कोई लेजिस्लेचर अभी तक आया नहीं है. वी हैव नॉट गॉट एनी लेजिस्लेशन in this country which says that how to stop or curb this. So, are there any jurisdictional issues when actually one party is living outside India and inside India? Are there different laws for that? See, different laws नहीं है. Marriage का बहुत simple concept है. The place where the marriage has been solemnized or the place where you stayed together last is the jurisdiction. So for example, if a person was married in Delhi, साकेत में उनकी शादी हुई एंड वो चेन्नई में लास्ट एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहे. सो लास्ट मैरिटल जो उनका हाउस होल्ड है दैट इज चेन्नई. सो आइदर द डाइवोर्स कैन बी फाइल्ड इन चेन्नई और इन दिल्ली साकेत जुरिस्डिक्शन में. सो ये कॉन्सेप्ट है जुरिस्डिक्शन का. फॉरेन केसेस के अंदर क्या है, कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया की ट्रीटी है जहां पे डाइवोर्सेस मिल सकते हैं अगर दोनों पार्टीज अवेलेबल हो तो. सो वहां पे डाइवोर्स हो जाता है. बट जर्नली जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है फ्रॉम द प्लेस वेयर द मैरिज वाज सॉल्मनाइज्ड एंड द प्लेस वेयर यू लास्ट स्टेड टुगेदर. So, can a divorce be guaranteed if one spouse is unable to have children? Like, is that a ground for divorce? Could be. That might be cruelty for someone. I mean, if you're able to prove that as a cruelty, ground for cruelty, that can happen. See, basically, impotency is a ground for divorce. So not having child is also a form of impotency, no? What happens when one partner actually declines to sign the divorce papers? You don't sign divorce papers if you are in a mutual consent in a
contested divorce. It is for the court to decide. वो तो फिल्मों ने हमें दिखा दिया कि उसने तलाक के कागजों पे साइन करने से मना कर दिया, इसलिए डाइवोर्स नहीं हो रहा है। डाइवोर्स तो होगा ना अगर तुम प्रूव कर पाओगे, तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स नहीं होगा तो कंटेस्टेड डाइवोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि तलाक के पेपरों पे साइन नहीं किया तो तलाक ही नहीं होगा। Okay. डाइवोर्स पेपर्स आर साइंड ओनली इन म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। दे अगर हमने डाइवोर्स का केस फाइल किया है और समन्स हो गए हैं दूसरी पार्टी को, नोटिसेस हो गए हैं दूसरी पार्टी को, उसके बाद भी वो नहीं आ रहे हैं, लगातार नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट एक्स पार्टी डाइवोर्स भी देती है। इट इज नॉट दैट एक्स पार्टी डाइवोर्सेस नहीं हो सकते, अगर दूसरा पार्टनर नहीं आ रहा तो डाइवोर्स ही नहीं मिलेगा। Our legal system has given right to anybody and everybody, and it is equal for all, from the president of this nation to some safai karamchari who's working or some beggar in this country. Laws are same for everyone. It is not just it is only for the rich. Okay. They might get facilities. They might hire much bigger lawyers than the person who's hiring these lower lawyers. और उसके जितनी पेइंग कैपेसिटी उतने वैसे का वो वकील कर रहा है, बट वकील करके लड़ने का अपॉर्चुनिटी और अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है। There are certain cases where in arranged marriages where the person on the other end actually does not tell you everything, like he hides something or tells you something false. Can that be a ground after marriage? Like Yeah. as you told about this. या अब कुछ केसेस में क्या है कि अरेंज मैरिज हो जाती है, बट इन दी एंड द गाय और द गर्ल कम्स आउट एज लेस्बियन और गे। दे डू नॉट कॉन्ज्यूमेट द मैरिज बिकॉज पेरेंट्स ने फोर्स करा, शादी हो गई, या उसने यही नहीं बताया कि वो इम्पोर्टेंट है, या उसने ये नहीं बताया कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट ही नहीं होता, एसेक्सुअल है। These all are grounds for divorce. Hiding something before the marriage is divorce. Asking for dowry again and again is a ground for divorce. Abuse is a ground for divorce. Alcoholism can be a ground for divorce. Writing letters to your husband or wife's office again and again, complaining about them, is a ground for divorce. So I think the most the someone suffers is when they are married and they have children. Certainly, yes. What is In a marriage, when children come into the existence, हस्बैंड और वाइफ से ज्यादा बच्चे सफर करते हैं। बेसिकली अगर मदर के पास बच्चे हैं तो मदर बोलेगी पापा अच्छे नहीं है, पापा के पास बच्चे हैं तो पापा बोलेंगे मम्मी अच्छी नहीं है। फिर वो बच्चे बार बार कोर्ट जाते हैं, कोर्ट देखते हैं, कोर्ट के अंदर विजिटेशन होती हैं, महीने में 2 बार फादर से मिल पाते हैं या मदर से मिल पाते हैं। सो चिल्ड्रन सफर द मोस्ट, उसमें कोई दो राहें हैं ही नहीं। आई टेल पीपल व्हेन दे कम फॉर अ डाइवोर्स, if they have children, I tell them for the sake of the children, think. I am not forcing you. Just think whether this marriage can be saved or not. Because see, जो बच्चा है उसको दोनों का प्यार मिलना जरूरी है, बट अगर वो प्यार नहीं मिल पा रहा तो दैट मीन्स उसके ऊपर इमोशनल ट्रॉमा आएगा, उस बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। देन बहुत सारे क्वेश्चन सोसाइटी उन बच्चों को पूछने लग जाती है। अब जैसे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, सब बच्चों के दोनों पेरेंट्स आ रहे हैं, एक बच्चे की सिर्फ मदर आ रही है या फादर आ रहे हैं, तो इश्यूज क्रिएट होते हैं एंड बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत असर पड़ जाता है। So is there anything about divorce laws in India that people are not actually aware about? It's known to very less people. लिटिगेशन कॉस्ट, जब भी आप डाइवोर्स फाइल करते हो, अगर मैंने डाइवोर्स फाइल किया है या तुमने डाइवोर्स फाइल किया है, यू आर सपोज टू पे अप्रोक्सीमेटली सम अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट टू द अदर पार्टी एज लिटिगेशन कॉस्ट। ये जनरली लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है डाइवोर्स फाइल करेंगे सिर्फ वकील की फीस है, 11-12 हजार रुपए दिल्ली के अंदर देने पड़ते हैं एज लिटिगेशन कॉस्ट टू द अदर पार्टी। Another thing is in divorce cases also you can get legal aid counsels. अगर आपके पास अपना वकील नहीं है, आप legal aid counsel ले सकते हो। उसके बाद एविडेंसेस का स्टेज होता है डाइवोर्स के अंदर भी, इश्यूज इसमें भी फ्रेम होते हैं, सो मैटर्स टेक टाइम एंड दे हैपन। Is there anything else about divorces that you would like to tell everyone, that what could be the repercussions that are See, not basically repercussions are very simple here. If you think that the marriage is not going to work out, take a decision sooner than lingering on it for a very long period of time. उससे चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। मतलब
एक साल में जो डाइवोर्स होने वाला है, अगर वो 14 साल की मैरिज के बाद होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लीगली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इमोशनली भी क्रिएट होती हैं। सो दैट हैपन्स। So I think I would like to end the podcast here. Thank you for being present here and for the amazing news on that. थैंक यू।